A very good morning to one and all. So once again welcome back in today's science class. So this is today's class is a fourth part of this chapter, ninth chapter soil. So in our last or previous class we discussed about the water, some basic characteristics of the soil, in which the water holding capacity, or you can say that moistures in the soil, and then we discuss about the aeration, and then we discuss about the population rate of water in soil. So now in today's class we start from the page number 99 of your textbook. Last paragraph first we discuss about this last paragraph, then we discuss some important facts about this population rate of soil and how it is important for the plants and for the organism. So now you everybody see first in your textbook page number 99. Just within the paragraph that is given in your textbook page number 99. The root of the plants, humus and the organic matter reduce the speed at which the water passes through the particles of the soil. Yani you can say that the roots of plants, humus means the dead part of plants and animals, and other organic matter that can reduce the speed of the water that passes through the particle. यानी प्रपोलेशन रेट को कम करता है, यानी पानी को जो है उसमें से निकलने से पास होने से रोकता है, यानी कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाटर को होल्ड करके रखता है, एब्जॉर्ब करके रखता है. तो इसीलिए सॉइल के अंदर क्या होता है, ज़्यादा ह्यूमस होना चाहिए, और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक सबस्टेंस होने चाहिए, क्लेस पार्टिकल्स होने चाहिए, सिल्ट पार्टिकल्स होने चाहिए, ताकि वो ज़्यादा समय तक वाटर को होल्ड करके रखे, उसमें पानी को वो बचा के रख सके सॉइल के अंदर, ताकि वही वाटर जो प्लांट के लिए यूज आ सके. Loamy soil is a mixture of the sand, clay and another type of soil known as the silt. Silt occurs as deposited in the river beds. The size of the silt particles is between those of the sand and the clay. Loamy जो soil है ना, the best soil that is growing for the plant is the loamy soil. लॉमी सॉइल इज द बेस्ट, सबसे बेस्ट जो सॉइल है किसी भी प्लांट की ग्रो के लिए वो है लॉमी सॉइल, क्योंकि लॉमी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, एवरेज टाइप के होते हैं. उसमें क्ले भी होता है, उसमें सैंड भी होती है, उसमें सिल्ट भी होता है, जो क्या करता है वाटर को ज़्यादा समय तक होल्ड करके रखता है. इट कैन एबल टू होल्ड द वाटर फॉर द मोर टाइम एंड विच इज अवेलेबल फॉर द प्लांट फॉर इट्स ग्रो एंड डेवलपमेंट. Loamy soil also has humus in it. It has the optimum aeration. It has the optimum aeration, water holding capacity and rate of population for the growth of a plant. Means it have the optimum aeration, means average air in it. It have or it trap the necessary or required amount of the water air for the growth of a plant or for the respiration of plant. यानी एक जितना जरूरत है उस अमाउंट में जो ये एयर को भी ट्रैप करके रखता है. इट ऑल्सो हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है, ज़्यादा टाइम तक ये पानी को होल्ड भी कर सकता है. और इसकी जो पॉपुलेशन रेट है वो भी क्या है, जो है वो भी कम है, ताकि वो पानी जल्दी से उसमें से निकलता नहीं है, वो ज़्यादा समय तक पानी को होल्ड करके रख सकता है. ठीक है, कम पानी ही उसमें से पास होकर निकलता है बिकॉज ऑफ द एवरेज साइज ऑफ अ पार्टिकल. So that's why this loamy soil is good for the growth of a plant. While studying the soil components, we noticed that the garden soil had the maximum amount of decomposing organic and humus. जैसे हमने पढ़ा होगा और यू सी दैट हमारे फार्म हाउस पे खेत में जो है ना, फील्ड में है या फिर गार्डन में है, तो हम कैसी सॉइल रखते हैं, ऐसी सॉइल होगी जिसमें ज़्यादा से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या हो, ह्यूमस हो, खाद हो, जिसमें जैसे लाइक सड़े गले पदार्थ हो या फिर गोबर जो है ना उसको डिकम्पोज होकर बायोगैस प्लांट होता है, उसमें सड़ गल के जो खाद बनता है ना, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट है या कंपोस्ट है, तो उस टाइप का जो खाद होता है वो अपन मिक्स करते हैं, ताकि ये क्या करे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करे, उसके टेक्सचर्स को इम्प्रूव करे और पॉपुलेशन रेट को डिक्रीज करे. So the sample from the age of the water body had less and that from the roadside that the least amount of the humus in it. If we take the two sample, एक तो ग्राउंड से मिट्टी ले लो या फिर गार्डन से या खेत से ले लो और एक किसी सड़क के पास में ले लो, तो दोनों का आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, यदि if we compare that about the humus, so that the soil that we are taken from the field or garden that has a much more amount of
humus in it as compared to the soil which is taken from the roadside. So now here some important conclusions are given. We are going to read one by one here. Everybody see in your textbook page number 100. Soil that have a slower percolation rate also retain more moistures in them. यानी जिस ऐसी soil जिसका percolation rate स्लो होगा, कम पानी को वो अलाउ करेगा ड्रेनेज के लिए पास होने के लिए, उस वो क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा. मीन्स दैट इज गुड फॉर अ प्लांट. ओके. Clay soil have a smaller pore size, retain more moistures and have the slowest percolation rate. Clay soil जो होती है वो कैसे, उसमें स्मॉल साइज होती है, एज आई डिस्कस इन अ प्रीवियस क्लास. क्ले सॉइल में have the small fine particles, size is a very finest particle, so that's why it can hold water for the long time. Because of that it have the slowest percolation rate. Sandy soil lets the water percolate faster, and sandy soil, because of the large particle, it have the much more space between the particles that allows the water to percolate or to pass faster, and it retain the least moisture, means it have the less water holding capacity. Loamy soil has the moderate rate, और loamy soil जो है वो उसमें average size of particles, that's why it's at the average moderate rate of that percolation rate and moisture retention, means it's have average moisture water holding capacity and average percolation rate. Excess of water in the soil is called water losing. Now sometime that you know that when we are giving the excess amount of the water to the plant over in the field, it creates the problem of water losing. यानी अपन समझते हैं कि ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बड़ा हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ़ वी गिव द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर by the process of irrigation, it's create a harmful effect on plant, and that is called the water losing. क्योंकि उस प्लांट के आसपास में पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण क्या होता है, that whole the soil is completely filled with water and there is no chance of having air in a it. क्योंकि पानी से पूरा भर जाएगा तो उसमें वैकेंट स्पेस ही नहीं रहेगा, और वैकेंट स्पेस नहीं रहेगा तो उसमें एयर नहीं होगी, एंड दैट इफ एयर इज नॉट इज देयर देन इट इज हार्मफुल फॉर प्लांट कैन नॉट एबल टू रेस्पायर, एंड फाइनली जो है वो फिर पौधा खराब हो जाता है, मर जाता है. तो इसीलिए जब ज़्यादा बरसात होती है ना, हैवी रेनफॉल होता है, मूसलाधार बरसात होती है, खेत भर जाते हैं पानी से, तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस वाटर लॉसिंग प्रॉब्लम. So it happens due to the too much rainfall or the irrigation and the poor drainage in a field. All the pores of the soil get saturated with the water. The roots are not able to breathe, so they start dying. As I told you that कि ज़्यादा रेनफॉल के कारण, ज़्यादा पानी देने के कारण या वर्षा के कारण क्या होता है, पूरा मिट्टी पानी से भर जाती है, तो वो जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, एंड फाइनली वो मर जाते हैं, सूख जाते हैं. ठीक है. Do you remember reading about the water harvesting in the previous class? And we already discussed about now we are facing the problem of water shortage. This year we also have much more a problem of the water shortage. So we need to conserve the water, and water can be conserved by the water harvesting method. Water harvesting method means the process of conservation or to store the rain water. जो बरसात का पानी है उसको अपन स्टोर करते हैं, टैंक बनाकर. छत का पानी है उसको अपन, बरसात का पानी उसको पाइपलाइन के थ्रू अपन टैंक में डाल देते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक. तो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम वाटर के अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकें. सॉइल एंड क्रॉप ऑफ इंडिया मीन्स डिफरेंट पार्ट में इंडिया के कौन कौन सी क्रॉप है और कौन कौन सी उस पर सॉइल की जरूरत होती है. Which kind of the soil would be the most suitable for the planting rice? Soil with the higher or a lower rate of population. यानी कि if we are talking about the rice, कि राइस के लिए कौन सी, तो ऐसी सॉइल जो ज़्यादा पानी को होल्ड करके रख सके, which have the high water holding capacity but less or a least rate of population. रेट ऑफ पॉपुलेशन का उसकी कम होनी चाहिए लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. ऐसी सॉइल जो होती है दैट इज बेस्ट सुटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस.
In some part of India, there is a clay soil. In some part of there is a loamy soil, while in some parts there is a sandy soil. Clay and loamy soils are both suitable for the growing of cereals like the wheat and gram. Such soil are good at retaining water. Yani this our country occupies different types of the soil. Somewhere is a sandy soil, somewhere is a clay soil, somewhere is a loamy soil. But the loamy soil is the best soil, best suitable for the growth of water, for the cultivation of wheat and gram and other type of cereals crops, because it has the good water retaining capacity. It has much more water holding capacity, and it also has less or average population rate of water. That's why this loamy soil is the best suitable for water growing of many type of cereals. Okay. Crops such as the wheat are grown in a fine clay soil. Wheat गेहूँ जो है गेहूँ अपन फाइन क्ले सॉइल होते हैं उसमें उगाना है ताकि वो ज़्यादा पानी को होल्ड करके सकते हैं, क्योंकि वाटर जो गेहूँ के लिए है, wheat के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है. Which drain water because they are rich in humus and are very fertile. For paddy, soil rich in clay and organic matter with good water. और पैडी के लिए, धान के लिए जो है वो क्या है, ऐसी सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो और जो पानी को ज़्यादा लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक होल्ड कर सके, विच हैव द वाटर more water holding capacity. That type of water, that type of soil is needed for the growth of water rice or paddy. For lentil, lentil means masoor है ना, दलहनी पौधे जो ना pulses, जो they all type of pulses and other pulses, the loamy soil which drain water easily are required for so जितने भी pulses है उन pulses के लिए दलहनी जो है वो उनके लिए सबसे बेस्ट है loamy soil. For the cotton and sandy loam or loam which is drain water easily and can hold plenty of air are more suitable. और कॉटन के लिए ऐसे अपन कह सकते हैं, कॉटन के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो आपका क्ले सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, क्ले वाली जो वाटर को ज़्यादा होल्ड करके रख सकता है. Soil is our prime natural and economic resource. So that's why this soil is known as a prime and economic natural resource for us. Different types of the soil are found in different parts of India. Soil in India differ in a composition and a structure. कि हर different part में different type of soil होती है. It have different structures and different composition and different structures and color. Soil is affected by the wind, rainfall, temperature, light and humidity. These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil. Means the soil is mostly affected by the water, the weather elements like rainfall, temperature, humidity, wind. These are the factors which are responsible for the formation of soil. That's why it have the great effect on water, greatly effect on water soil. ये सबसे ज़्यादा soil की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वेदरिंग प्रोसेस में इन्हीं का सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है. These are some important climatic factors which affect the soil profile and bringing changes in it. Climatic factors as well as the components of the soil determines the various type of vegetation and crops that might grow in any region. And the climatic factors, with the climatic factors, the type of soil or the structure of soil is also important to water to grow up different type of vegetation and different type of crops. यानी अलग-अलग टाइप के जो पेड़ पौधे होते हैं अलग-अलग एरिया में, वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ में टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है, किस टाइप की सॉइल है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर द टेक्सचर्स, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ दैट सॉइल. नाउ लास्ट वी डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सॉइल इरोजन. Soil erosion, this is soil erosion. Soil erosion means when the loose topmost layer of the soil is when easily blown away by the water current and air current. This is known as what? Soil erosion. Because we know that the soil erosion is taking place by the overgrazing of the cattle in the field.
It is one of the important reason for water soil erosion. Second thing, main important, that is deforestation, because we know that the root of plant hold firmly tightly hold the soil. तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो सॉइल इरोजन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है. इफ इंस्टेड ऑफ दैट वी गो विद द एफॉरेस्टेशन और प्लांटेशन, यदि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओगे तो क्या होगा, प्लांट या पेड़ों की जो रूट है, जड़ें हैं, वो सॉइल को होल्ड करके रखेगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा. सो सॉइल इज द प्रीसियस रिसोर्स. Soil is needed for the agriculture practices. It has to be fertile in order to be able to support a good crop. The fertility of the land lies in the quality of the soil. As you have learnt, soil is the product of the interaction of living organisms with the rock. The topsoil is the most fertile layer of the soil. Sometimes the topsoil is removed from the soil, and this is removal of the topsoil is called what? Soil erosion. As I told you that this uppermost layer or the topmost layer or topsoil is become very loose. It has too much amount of the humus, nutrient and minerals for the plant. But because of this water current, because of loosely in nature, due to the water current and a heavy rainfall, it can easily remove from the place, or it can easily blown away with the water current and air current. This phenomena, this process is called water soil erosion. Now what is the effect of the soil erosion? कि soil erosion के effect क्या है? Soil erosion result in the loss of fertility and makes the land barren. As you see that, as you know that कि almost the humus part is in the uppermost layer, topmost soil. तो वही टॉपमोस्ट सॉइल जो है वो उनकी चली जाएगी, हवा से बह के चली जाएगी, पानी से बह के चली जाएगी, तो पीछे क्या बचा? नथिंग. हाँ, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा पौधे के लिए. उसमें जब ह्यूमस सब बह के चला जाएगा पानी के साथ में, तो वो क्या हो जाएगी? बिकेम द अनफर्टाइल, बैरन, एंड इट इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन. मीन्स ये धीरे 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 पूरे जगह को अनउपजाऊ बना देता है, डेजर्ट में वो कन्वर्टर हो जाता है. Soil erosion also leads to the desertification. As I told you that it also create the problem of desertification because of ऊपर वाली सबसे इम्पोर्टेंट जो लेयर बह के चली जाएगी, तो नीचे वो सब अनउपजाऊ बन जाएगा और धीरे धीरे पूरी मिट्टी जो वो डेजर्ट में कन्वर्टर हो जाएगी. Desertification refers to the increase of the desert area because of this soil erosion. So to check against this soil erosion, we need to plant more and more trees. यानी इस प्रॉब्लम को यदि दूर करना है, कम करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिएगा. एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस से ही अपन सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे रखोगे तो वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, वो पॉपुलेशन रेट को भी क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहाँ पे स्टोर होगा और वो पानी ज़मीन में सीपेज होकर अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर होगा, तो वो वाटर के लेवल को भी रिचार्ज करेगा. और प्लांट जो है वो ऐसे भी प्यूरीफायर होते हैं, इट्स नेचुरली प्यूरीफायर फॉर द एयर, एंड इट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द ब्रिंगिंग वाटर, द रेन. It is a natural house or habitat for the many living organisms or animals. So it can increase water, the interactive or interactions between the living organisms, and it will make a good water environment. So that's why we need to plant more and more trees. Okay. So this is all about this chapter. Anyhow, we finish this chapter. One more part is here that we discuss in the coming class. Thank you. Have a nice day.